Hello! This is a unique day. The Bahar on the box office is back with long lines at the box office, and world of cinema is celebrating people with golden pens and white papers where they create the magic of drama and romance and emotional engagement. Just in case you're wondering what am I talking about, I will show you the visuals for better understanding. I'm Atika Farooqui. Let's begin. Now showing with the highlights. This week's release, Pathaan, is a high-octane film with sci-fi, romance, outstanding action, and it's a visually appealing film that ticks all the boxes right. Javed Akhtar and Gulzar meet up in a rare evening filled with memories of their shared work, their opinion of each other, and some cool boy talk. Vasan Bala, at the launch of his series Cinema Marte Dum Tak, tells the story of pulp cinema, popular in the 90s, and he explores the world without judgment. So let's talk about Pathaan, an orphaned boy who had served in the Indian Army later and then becomes an undercover spy as well as a centre-forward fighter for the Indian covert operations abroad, is played by Shah Rukh. An estranged raw agent, Jim, played by John Abraham, was once an ardent patriot till his family was destroyed in front of him and there was no government that came in at the right time to bail his wife and unborn child out. That led him astray and he is now the biggest enemy of the country. Dr. Rubina Mohsin, ex-ISI agent who studied medicine but owing to his father's being incarcerated in a foreign location and she having a troubled childhood, led her to work for the ISI, but she will not participate in the evil intentions of the handler, even if that means she loses her job or is being labelled as a traitor by them. Pathaan, an exiled raw field operative, is assigned to take down his old nemesis named Jim, a former raw agent turned rogue who leads Outfit X, a private terrorist organization which is planning to spread a deadly virus dubbed as Rukh across India. Now, these three form the crux and the key characters to a romantic story, revenge drama, sci-fi thriller, spy universe, exotic-looking film that celebrates great visuals and is very clear in targeting the international audiences or the diaspora with a sharp take on geopolitics as well as a more modern way of life and thinking. First of all, I must tell you the amount of money, 250 crores to be precise, is evident for your eyes to see on screen. The action sequences, the scenes in foreign lands, in the air, in the snow-capped mountains, in the frozen lake, the desert is all mind-blowing. Just the visuals, beautifully captured by cinematographer Sachit Paulos, take you to the visual imagery of international films like Mission Impossible, Bourne Identity, Spider-Man, etc. The innovations in the fight scenes, the actions which employed various new kind of techniques and weapons and those flying gadgets make one feel proud of such upscaling in Hindi cinema. Dialogues by Abbas Tyrewala in a film that has Indian and Pakistani warring with each other, yet in a romantic relationship because they are filmy, reminding you of films like Gadar sometimes, and also they are quite sarcastic, the dialogues. Like Jim, John Abraham says to Pathaan, "मैं आशिक समझा था तुम्हें, तुम तो देश के बेटे निकले." Rubina says to Pathaan, "इससे सस्ती ड्रिंक नहीं मिली कोई." Then Pathaan says, "क्या है ISI जितना बजट नहीं है हमारा." John says to the general, Pakistani general, "खैरियत है?" The general replies, "खैर नहीं, कहर चाहिए," reminding me of Amrish Puri of Gadar. To balance this desi dialogue-bazi is quite chic appearances of characters, great costumes. Shah Rukh's new hairstyle is almost a character in the film. It defines his brazen, devil-may-care attitude towards risky situations, and the character's upright morality gives meaning to the adventures that he undertakes. This is by far one of the best looks of all the actors in recent past. Story and direction by Siddharth Anand is quite next level. Never does he falter in connecting those pieces of his story, though it's quite a lot of chapters in the book. But he weaves them all without leaving any open ends. Also, can't comment on the authenticity of a lot of operations shown there, but they do look great while they were happening. Screenplay by Sridhar Raghavan never leaves a lethargic moment. At 146 minutes, the loud and very classy background music by Sanchit Balhara and Ankit Balhara that gives the movie an international feel is blazing in your ears but never goes over the top.
And songs Besharam Rang and Jhume Jo Pathaan by Vishal Shekhar merge quite well with the sophisticated and superior yet brash storyline. Listen, the people in my screen were whistling and clapping, and yeah, there is a surprise for you in the middle of the story and also in the end. Let me not spoil it for you. That's for you to see. Basically, fabulous. It's a 3 से 6 की पिक्चर. पॉपकॉर्न खाने का, बचा लो के साथ जाने का, पैसा वसूल. Now moving on to more subdued elegance. Javed Akhtar and Gulzar Saab are two literary figures who command immense respect in the world of Indian cinema. Apart from Gulzar Saab's direction in many films like Andhi, Marches, etc., and Javed Saab's political activism, everything seems to be common between the two. They write magic, create human emotions, celebrate excellence, indulge in exploration of human relationships, analyze human behavior through their characters. They worked together for the first time in film Andaz in 1971, which was a story about two single parents trying to find a life partner. They have also tried to re-engineer the popular social norms. I sat down with them on an evening in Bandra in Mumbai, where many eminent directors and actors from the industry were present too. And look how beautiful this conversation is. 1971 में एक फिल्म आई थी अंदाज, जिसमें शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी जी थे. अब आज के ज़माने में अगर आप बात कहें कि भाई फलाने का तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गई है, दूसरी शादी करा दो, तो आप भवें नहीं चढ़ाएंगे कि क्या बात कर रहे हो भाई, क्या ज़माना, कैसी बात कर रहे हो, नहीं. और आपको अगर कोई कहे कि फलाने के स्पाउस की डेथ हो गई है तो लड़की की शादी दूसरी करा दो, तो भी आप कोई बड़ी बात उसको नहीं समझेंगे. कोई सिंगल मदर है, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, लाइफ पार्टनर नहीं है और आप उसकी शादी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे. लेकिन 1971 में अंदाज फिल्म इसी चीज़ पर बात करती थी. उसमें हीरोइन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनका बेटा था, उसको ससुराल ने बाहर निकाल दिया, और जो हीरो हैं वो एक बेटी के फादर थे और उनकी चाइल्ड बर्थ में वाइफ की डेथ हो गई थी. अब ये दो सिंगल पेरेंट्स हैं और 1971 में उसी फिल्म पे काम किया गुलजार साहब ने और उसी फिल्म पे काम किया जावेद साहब ने. उसकी स्क्रिप्ट लिखी और वो फिल्म उस ज़माने की सिंगल पेरेंटहुड और सिंगल पेरेंटहुड के बाद एक सिंगल इंसान जिसको शादी की ज़रूरत है या लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, उनको मिला देना चाहिए. ये बात समाज में ऐसे इंट्रोड्यूस की जिस ज़माने में सती और बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस भी हमारी ज़िंदा थी. तो जो हम सलाम करते हैं और सल्यूट करते हैं गुलजार साहब को और जावेद साहब को, वो ऐसे ही नहीं करते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें सिनेमा के ज़रिए समाज में छोड़ी, अल्टीमेटली समाज उन रास्तों पे, अच्छे रास्तों पे चलने लगा. तो इसी बात पे गुलजार साहब को मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा. देखिए, आप मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट दे रही हैं उस फिल्म में, इतना है नहीं. गुलजार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो मुझे याद है इनका जो गाना था मोरा गोरा रंग ले ले मैं शाम रंग दे दे, ये जब आया था उस वक्त तो हम कॉलेज में थे और जब ये गाना सुना था और उसके इनके और एक दो गाने आए थे, तो ये कौन है. वो एक इनकी इनफरादियत तो है इनकी आवाज़ की, उसमें तो कोई बहस ही नहीं कर सकता. इनका गाना हो या इनकी नज़्म हो या इनका शेर हो, आप सुने तो आपको पूछना नहीं पड़ता कि किसने लिखा है, तो आप समझ जाते हैं किसने लिखा है. तो ये एक नई आवाज़ उस वक्त आई थी, तो हम लोग कॉलेज में भी मुतासिर हुए थे और मुतवज्जे हुए थे कौन. अब उसके बाद मैं आया था तो हमारी क्या औकात, भाई क्लैप फ्लैप मारा करते थे. तो गुलजार साहब फिर भी कहीं पहुंच चुके थे तब तक, तो कभी कभी दिखाई देते थे. इनके पास एक फिएट कार थी, उसमें 2 दिन का शेव बड़ा हुआ इनका, ये दिखाई झलक मिल जाती थी हमें इनकी, ये गुलजार 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 ऐसा करते थे. तो उसके बाद पहली बार मुलाकात जो हुई गुलजार साहब से मेरी, वो सिप्पी फिल्म में मैं और सलीम साहब दोनों को 750 रुपये महीना, 750 रुपये महीना की नौकरी मिल गई. पहली माकूल नौकरी थी. और जब मुझे 750 रुपये महीना मिले तो मुझे इत्मीनान हो गया कि भाई मेरा करियर तो बन गया है, अब देखते हैं थोड़ा बहुत आगे भी कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना काम तो बन गया है. गुलजार साहब उस फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे, हम तो एडिशनल स्क्रीन प्ले चूँकि सेकेंड हाफ पिक्चर का फंस गया था, इसके लिए हम कुछ फायर ब्रिगेड लेके अपना आए थे. तो वो बहरहाल, लेकिन फ़ायदा मेन ये हुआ पिक्चर भी चली, वो कामयाब हुई और इस चक्कर में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई गुलजार साहब से. अब बम्बई बड़ी मसरूफ़ नगरी है,
ऐसे बेकार तो लोग मिल नहीं पाते, हम लोग की भी मुलाकात कम होती है, लेकिन जब होती है तो भरपूर होती है और दिल भर के होती है। और एक मोहब्बत का रिश्ता गुलजार साहब से, वो मेरा भी सलाम कहिएगा। तो रहा हमेशा, और ये बहुत ये म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है। गुलजार साहब से जो रिश्ता है वाकई कम होता है लोगों से, और हम जब भी मिलते हैं तो क्या लिखा है इसके बारे में भी बात करते हैं, एक दूसरे को सुनाते भी हैं। उसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे सब याद रहता है और इनको याद नहीं रहता तो मैं ज़्यादा सुनाता हूँ। कुछ दिनों पहले गुलजार साहब और जावेद साहब, मुझे याद है कि फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तो शबाना जी आपने एक फ़ोटो लेके डाला और कहा कि कैप्शन दिस। तो करण जौहर का एक बहुत प्यारा जुमला था, उन्होंने लिखा कि 116 चांद की रातें और एक ये तस्वीर। तो आज भी वही आलम है, एक ये तस्वीर। और हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि हम आपके साथ स्टेज पे बैठे हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपके साथ बैठे। बहरहाल मैं उससे मिलकर पूछूंगा तुमने चांद किसको कहा और रात किसको कहा पता लगना चाहिए ठीक से। नहीं, वैसे तो चांद का कॉपीराइट मेरा है कि इसलिए ये एक बहुत पुरानी किताब है, एक बूंद चांद। और वैसे कोई और इस्तेमाल करे तो उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए, पर मुझे कोई रॉयल्टी देता नहीं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि ये 116 क्यों है, और सच ये है कि मुझे गिनती नहीं आती थी, कहीं भूल गया तो 116 नहीं थी, वो 117 थी। अच्छा जी हाँ, मतलब ऐसा कोई मतलब इस 117 की कोई गिनती में 116 नहीं 117 होंगे, नहीं तो 119 होंगे। मतलब जैसे कि एक साल में इतनी चांद रातें होती हैं, ये मतलब। वाह, बहुत खूबसूरत। कई लोग ये भी सोचते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से, और शायद मुझे ऐसा समझ में आया उनकी बातों से, कई लोग आपको प्रोफेशनल राइवल समझते रहे कई सालों तक, कि भाई ये तो दोनों एक ही तरह के दो लिखने वाले हैं, इनकी तो आपस में दोस्ती नहीं होगी। अब हकीकत आपको पता है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है पिछले कई साल? नहीं, देखिए, एक तो ये तो कोई सवाल ही नहीं इसमें, मतलब मुझे कभी एक सेकंड को नहीं लगा कि हमारी रिलेशनशिप में इस तरह की कोई तनाव या तलखी या कोई एक मुकाबले का मिजाज है ही नहीं, और है ही नहीं। और दूसरी सच बात यह है कि हमारा लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है, बहुत अलग। एक ही बात कॉमन है कि दोनों अच्छा लिखते हैं, बाकी जो है माफ़ कीजिएगा कितना मैं इंसार करूँ, अब झूठ तो नहीं बोलने लगूँगा ना ह्यूमिलिटी में, तो ये बिल्कुल अलग और कोई सवाल ही नहीं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि आप ये देखिए, हमेशा जो वाकई अच्छे जैसे फैज़ और मजाज बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन दोस्त थे। या आप ये देखिए कैफ़ी साहब और सलाल जाफरी, मतलब सगे भाइयों जैसा रिश्ता था उनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक वोकेशन में हैं या एक काम में हैं तो आप दूसरे से जलने लगें। हसद सिर्फ उस आदमी में आ सकता है, जेलेसी सिर्फ उस आदमी में आ सकती है जिसमें कहीं कुछ खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना तो अच्छा काम देखे हो तारीफ करेगा। मैं तो कितनी बार हुआ, गुलजार साहब से पूछिए कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ जो इन्होंने आज से 20 साल पहले लिखा था, कहीं मुझसे मिस हो गया, और उसका एक अंतरा मैं सुन, तब मुझे समझ ये किसका गाना है, ये तो गुलजार साहब का है। मैंने इन्हें फ़ोन किया कि गुलजार साहब ये गाना आपने कब लिखा था, ये नहीं पूछा कि आपका गाना है कि नहीं, और ये तो कमाल का अंतरा है। ये सही कह रहा हूँ गुलजार साहब? जी जी। तो ये तो आप अगर एक अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ नहीं समझ सकते, अच्छे काम को अच्छा काम नहीं समझ सकते, तो ये आपकी बदनसीबी, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला। बल्कि ये अर्ज़ करूं कि मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मेरे रेफरेंस में कहा जाता है कि आप अच्छा भला लिखते थे, मोरा गोरंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, अभी अरे बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया कहाँ से आ गया भाई, ये आप क्यों करने लगे। और मुझे जावेद साहब ने दाद दी थी, और यकीन मानिए कि
बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैं उन्हें कहता देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया था, तो फिर खामोश हो जाता, तो मुझे तो गवाही मिल जाती है। हम लोग जयपुर में एक बार थे, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे, और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रश करता हूँ एनी हिम कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता। ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि एक फिल्म के लिए लिखा गया है। वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई सौ साल से लोग गा रहे होंगे। ये फोक सॉन्ग है। हाँ नहीं, और बत्ती तो वहाँ भी जल गई थी। कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलें तो बत्ती जलती है, अब नेगेटिव मैं ही होगा तो नहीं हो सकते थे। गुलजार साहब, आपके गानों में एक इत्मीनान पसंदी, एक ऐसा ज़माना जब थोड़ा रेस्टलेसनेस रहती थी दिलों में, उस ज़माने में इत्मीनान पसंदी की आपने बात की और उनको हर हाल में खुश रहने का एक जज्बा जो होता है वो जगाया। वो गाना था थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी भी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। एक ट्रक ड्राइवर गा रहा है। अब ट्रक ड्राइवर से बुरी नहीं कह सकते, लेकिन वैसी ज़िंदगी आप नहीं चाहेंगे कि हो, क्योंकि उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन ट्रक ड्राइवर बहुत रूमानी अंदाज में गा रहा है कि राह पे रहते हैं, सड़कों पे गुजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। ये शायद उस वक्त की बड़ी ज़रूरत भी थी। तो ये जो अलग अलग भाव हैं, बड़े नरमी के जो भाव हैं, ज़िंदगी के सारे भाव में जो सबसे में जो सॉफ्टनेस ला सकने का जो एक काबिलियत थी आपकी, उसके बारे में बताएं। मैं अर्ज़ करूँ कि मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, और मजाक भी नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। ये सही है कि मैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे आकर, मैं कॉलेज में फेल हो चुका था, तो मेरी ज़बान एक हद तक रही जो मैंने अपने माहौल से उठाई, और वो माहौल दिल्ली का पार्टीशन से पहले का, उससे पहले के माहौल में जो कोई थोड़ी बहुत ज़बान सीखी थी, तो एक मुजीबुर रहमान हमारे मौलवी साहब थे, वो गुनगुना के और तरन्नुम में पढ़ते थे गज़ल और सिखाया करते थे उसके मानी। तो जो बच्चों को सिखाने की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, तो वो उतनी मुश्किल ज़बान नहीं थी, और जिस तरह पढ़ाते थे हमें, तो मैंने जो सीखा या उर्दू ज़बान सीखी वो अपने माहौल से, आसपास से, और राइयों की ज़बान जो बागों के ठेके लिया करते थे, वो माहौल था हमारा, तो वो सीखी। और बल्कि पार्टीशन के बाद जब हिंदी आई है, तो माफ़ कीजिएगा मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ अभी भी, और ना लिखता हूँ। मैं आज भी उर्दू ही में लिखता हूँ, उर्दू ही में पढ़ता हूँ। तो थोड़ी बहुत देवनागरी वो साइन बोर्ड देख देख के सीख गए, क्योंकि बड़ी आसान है, देवनागरी बहुत आसान ज़बान है। और बोलिए, जावेद साहब ने ज़बान सीखी, और आज भी मैं कई बार लफ्ज़ों के मानी में किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ में भी फंस जाता हूँ, तो आपको फ़ोन करता हूँ, और या जावेद सदीकी साहब को तो फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो इसलिए मेरी ज़बान उस माहौल में और उसी क्लास में और स्कॉलरली नहीं है, और आम आदमी की ज़बान से जहाँ से जो सीखा अब तक वही की वही है, और उसलिए वो इस तरह के अल्फाज आते हैं। ये ज़रूर है कि एहसास अलग होता है, कई बार एक लफ्ज़ की परतें नज़र आती हैं। जावेद साहब ने भी एक जगह कहा है कि अल्फाज के रंग होते हैं, लफ्ज़ों के रंग होते हैं, जो आपने कहा है एक जगह जो पढ़ रहा था मैं, और ये सही है कि उनके रंग पहचानने वाली बात है। और मुझे अल्फाज के कई शेड्स नज़र आते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह हैं। प्रिज्म में जैसे किरण पड़ती है और कितनी तरह से उसके रंग निकल आते हैं, और मुझे उर्दू के अल्फाज बिल्कुल उसी तरह से अल्फाज नज़र आते हैं कि उसमें से प्रिज्म से निकलते हुए कलर्स हैं, जो जिसको छू जाए, जो जिसको नज़र आ जाए। तो इसलिए मैं, मेरा ख्याल यही पूछा था आपने। We're heading for a short break here. After the break is प्यासी चुड़ैल, खूनी दरवाजा, अकेली रात, मौत का हुस्न, दुल्हनिया ले जाएंगे छीन के, सिनेमा मरते दम तक। यार ऐसी चीज़ बहुत सालों में नहीं देखी। It's quite wacky and unique what we will show you after the break. The world of horror and adult films, the posters of which, while walking to the school on the road, you felt quite uncomfortable watching. That's the world coming up after the break, but without any judgments.
Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqui. Vasan Bala, with his films Monica Oh My Darling and Mard Ko Dard Nahi Hota, has gained a reputation of a filmmaker who sees no barriers while sketching his characters or the morality of the situation that they are in. He's now ready with his series called Cinema Marte Dum Tak on Prime Video, which is all about pulp cinema, which has been popularly called B-grade cinema. He wants you to understand this world without judging it, and it's quite a world. पोस्टर्स तो देखते थे तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो होती थी ये क्या है, पर हम कभी उस सिनेमा हॉल में गए नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी. सो व्हेन वी यूज्ड टू गो टू दोज VHS पार्लर्स, we would obviously go asking for the Ramsey films, Purana Mandir, Veerana. But if those tapes were not there or they were busy in circulation, then a Harinam Singh film would be given to us, or Vinod Talwar or Mohan Bakri, those films. So that is how we got kind of introduced to these kind of films. Obviously you could see the difference, but they were still entertaining, intriguing. Even the Ramsey films had a bit of erotica, but obviously these things pushed it to an extent that you didn't know whether you're supposed to be aroused or you're supposed to be disgusted, or it was like a mixed emotion watching all that. But what was very clear that they were very unique in their making. It is about them, their world, and through that either you're educated, you're entertained, you want to judge. It's up to the viewer. They are trying to make the best out of what they got in life, and they're living their life with as much dignity as they can. I'm sure they would have wanted to do other things, but they did this and they were successful at to a certain extent with some things. They would have a lot of regrets of the things that they could have done right, but then so that is life. Samira Kanwar from Vice, she called me in 2019 to discuss a project that they were doing. And it was revolved around the world of the pulpy filmmakers from the 90s. I kind of was really curious about the world, myself having seen some of those films, and was more than game to jump in. And she said Amazon would be our partners, and that was like incredible, because and everyone came with a very open mind, and we all were on the same page right from the beginning that it will be them in the foreground and not us. See, B movies came to be known as B movies because Hollywood, when they would bankroll a film with a bigger star, they would also bankroll a smaller film in the same time to be playing in the bigger theatres and the smaller theatres, in the big centres and the small, which is why they came to be known as B movies. So they would be made in really less time, like some were even made astonishingly in 7 days at a cost of 5 to 7 lakhs, but they kind of earned 50 to 60 lakhs. Also, those were the days where the distributor was dictating terms. The distributor was asked for certain kind of films to be made, then the producers and the director would make a poster, get a star cast and give a title to it. So based on the poster and the title, the distribution would happen. Then the territories would be sold. Based on the money they got from the territory, they would make the film. That's about the end of this show. Picture अभी बहुत बाकी है. आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर चमन में भी कोई सितारा न हो. Yes, देखिए हमारा और आपका साथ बहुत लंबा चलेगा, इसलिए पकड़े रहना, छोड़ना नहीं. See you soon again in the next episode. I'm Atika Farooqui saying goodbye. Tada, take good care of yourself.